Hello everyone. A very good evening to all of you. Welcome to the current affairs classes with me, that's Manoj Pathak. And I hope that you tried to go through the things that we discussed in the last session and made sure that you have covered up all the aspects related to it. And today we look at one more segment where you'll see that this time places again dominate. Unlike last lecture where astronomy was a dominant portion, this time we'll be looking at lot of places in news. Okay. So a very good evening, Mohit. Very good evening to all of the people who are attending the lecture. So today we'll be starting with some of the places which are in news. And it's my responsibility to remind you one more time that last time, after a decade, UPSC asked so many questions from places that all the suggestions that people were making, including me, that you don't have to run behind the places, but they did not suit the way we wanted to. Okay. So a very good evening, everyone. Vrinda, Subham, and Suraj. Okay. So a very good evening to all of you. So in case you have any kind of questions, good evening, Roshan. A very good evening, Vaishnavi. So in case you have any queries from the last discussion that we had, I'll be more than willing to discuss that first before we start with the lecture. Okay. And like I said, today we'll be discussing a lot of places which were in news when okay. This is something that happened. Okay. When I was not here, we are trying to complete the news items which were in the newspapers, in Hindu, Indian Express and rest of the papers in September. Okay. And from Monday, we'll try and make sure that we are covering that thing within a week. A very good evening, Rose. A very good evening. So I hope that everybody is settled. And now I'll be starting with some of the aspects which were in news. ठीक है, तो अब हम जो जगह न्यूज में थी, जो न्यूज बाकी भी related to geography, ecology and environment, astronomy and all, we'll be covering all of that. ठीक है, हम उन सारी चीजों पे फोकस करेंगे. तो सबसे पहला एरिया जो मैं आज कवर करने वाला हूं इज वेमनाड लेक. दिस वाज इन न्यूज. So this is in Kerala. Okay. So if you look at the map of Kerala, okay, let us say this is Kerala. तो यहां अगर आप देखेंगे तो this is a big lake. This covers a lot of area. In fact, it stretches more than that in parts. Some of the times it stretches more than this main area which I have shown. This is your Vemnad, okay, and this is in Kerala. तो लोकेशन सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, कहाँ है नहीं है. वेरी गुड इवनिंग विक्रम बेटा. So this location is important, okay, and this is a very big lake. You can see that in whole of the state it occupies such a huge area. ठीक है, इसका एरिया काफी ज्यादा है, आप देख सकते हैं. दिस इज लाइक ए बिग एरिया एंड दिस इज ए बिग लेक बिकॉज इट इज फेड बाय 4 रिवर्स. ठीक है, 4 रिवर्स ऐसी हैं जो इसे फीड करती हैं. ओके, एंड पंपा, मनीमला आर इंपॉर्टेंट वंस. ओके, ए वेरी गुड इवनिंग आसू बेटा. सो पंपा, मनीमला आर इंपॉर्टेंट वंस. And 2 of the rivers are small rivers. Okay, 2 rivers जो बाकी हैं वो छोटी हैं, मीनाचिल एंड अचनकोली. सो मीनाचिल, Achankolli.
Okay, so you need to remember at least these two names. ठीक है, क्योंकि चारों रिवर्स का नाम पूछने के चांसेस कम है, बट स्टिल द वंस विच आर लिटिल बिट मोर नोन, उनके चांसेस ज्यादा हैं कि वो पूछे जाएंगे. ओके, नाउ दूसरी चीज जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, द सेकेंड थिंग विच इज important and can be asked is, this lake is the longest lake in the country. Longest lake in the country. Okay, plus second biggest wetland in the country. ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. Second biggest wetland in country. Okay, so location is specific information पूछी जाती है, but rest other informations can also be asked, so you need to remember some of these things. Okay, and it was in news because it is shrinking. तो ये मेंस में भी इंपॉर्टेंट है. Okay, अगर वेम्बनाड के बारे में ही नहीं पूछते हैं, इवन इफ दे आर नॉट आस्किंग अबाउट पर्टिकुलरली दिस लेक इन मेंस, डेफिनेटली दे कैन आस्क कि व्हाट इज गोइंग टू बी द इल इफेक्ट्स ऑफ ए श्रिंकिंग वेटलैंड. ओके, तो डाइवर्सिटी पे इफेक्ट होगा, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होगा. दीज आर सम ऑफ द कॉमन पॉइंट्स दैट डेफिनेटली यू कैन टॉक अबाउट. ओके, नाउ the other aspect which is important about it is that there is one island, okay, जिसे हम midnight sand कहते हैं. Okay, so this is the term that you need to remember. Midnight sand is an island in Vemnad. Okay, because UPSC tends to ask some of the questions which are not very popular. Okay, कभी कभी क्या है कि पॉपुलर नेम नहीं पूछते हैं. इफ somebody will ask Pathiramal Island, okay, every book writes and talks about this island. इसका दूसरा नाम है मिडनाइट सैंड. ओके, तो इसको जानना जरूरी है आपके लिए. Okay, midnight sand, Pathiramal Island. So these are the things that you need to know about it. Okay, now अगर आपको पता है, अमर, a very good evening. अगर आपको पता है, if you are aware that there is a seaport located in Kerala in the Kochi district, okay, जिसे हम वेलिंगटन आइलैंड के नाम से भी जानते हैं. So it is also situated here. Okay, so Wellington Island seaport in Kochi. Okay, so it is part of Vembanad Lake which was converted into the seaport. So a lot of information that is related to this thing, ये आपको जानना है, जिसमें से कोई भी चीजें पूछी जा सकती हैं. ओके, प्लस दे आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स विच आर आस्क्ड इन एग्जाम रिलेटेड टू इट, जो कल्चर से रिलेटेड हो जाता है. सो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस. ओके, दिस इज वन रेस जिसे आप कभी कभी कल्चर में अक्सर पूछा जाता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्नेक रेस. ये पूछता है स्नेक बोट रेस, वो भी यहीं पे होता है इन द मंथ ऑफ अगस्त एवरी ईयर. ओके, दिस इज ए स्नेक रेस. in the month of August. Okay.
So in cultural aspect often you see such questions. Okay, तो वो भी यहीं पे होता है. It takes place in the Vembanad Lake. Okay, so I hope that everybody is clear with the aspects that I have talked about. Okay, so this is something which is not only geographically important, but it is also culturally important and environmentally important, and it is also important for sports, that is boat race. तो इसे याद रखेंगे. Okay, now the next news item that we'll be talking about, flue gas desulfurization target. Flue gas desulfurization targets. Okay, so flue gas desulfurization targets, it is something which is related to the thermal power plants. Okay, most of the thermal power plants were supposed to make sure that they do not release sulfur in the atmosphere. Okay, अगर आपको पता हो तो 75% of the power in India and 80% of pollution related to energy can be attributed to coal-based पावर प्लांट्स. ठीक है, एनर्जी रिलेटेड पॉल्यूशन जो है, ओके, रिलेटेड टू एनर्जी, ऑलमोस्ट 75% ऑफ इट, ओके, of the power which is generated in the country, and 80% of the pollution is related to this thing. Okay, and we are specifically talking about two types of pollution. Okay, not every thing, two types, that is SOx and NOx. ठीक है, sulfur oxides and nitrogenous oxides. And the government of India had asked them to ensure that this desulfurization process, मतलब कि सल्फर बाहर ना आए, ऐसा इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था. एंड इनिशियली द टारगेट वाज 2017. इनिशियल टारगेट 2017. ओके, इसे 221 किया गया, एंड फाइनली इट इज इन न्यूज बिकॉज द टारगेट हैज बीन रिवाइज्ड टू 2025. ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज दैट इट कैन नॉट बी अचीव्ड इन लेस टाइम, तो ये 2025 तक इसे कर दिया गया है. ओके, सो एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, आई होप. एंड पहले कैसा था, द गवर्नमेंट गेव द टारगेट्स बट इट डिड नॉट पेनलाइज एनीवन. किसी को यह नहीं कहा गया कि अगर आप टारगेट को अचीव नहीं करते हैं तो आपको बंद कर दिया जाएगा. सो पीपल वर रिलक्टेंट टू डू दैट. लेकिन अभी अगर हम देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड दैट इफ समबडी इज नॉट डूइंग दिस थिंग, ओके, सो क्लोजर विल बी इन्फ्लिक्टेड by 2027. ओके, अगर कोई भी ऐसा है, 2025 का टारगेट है, इवन इफ someone fails to achieve that, let's suppose that the government will not act for next 2 years, but if somebody does not follow the suit by 2027, then definitely there will be closure without any further targets. ठीक है, वो उसे बंद किया जाएगा.
okay, and most of the focus अगर coal related कहा जाए, though we have written that SOx and NOx, okay, but thermal power plants, if you talk about, okay, they are the biggest sources of sulfur oxides. ठीक है, sulfur related pollution can be attributed to thermal power plants. NOx का आप क्या है कि सबसे बड़ा सोर्स थर्मल पावर प्लांट नहीं होता है. ओके, दीज आर कैटालिटिक कन्वर्टर्स दैट आर इन व्हीकल्स. सो SOx से ज्यादा रिलेटेड है. एंड इफ यू लुक एट द ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स ऑफ यूपीएससी, you'll definitely discover that this has been asked many times. Okay, थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड, कोल बेस्ड, कोल फायर्ड पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. ओके, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीवन. The other news item that you can focus on for both prelims and mains, ये भी सारे important है. As an example, as a case study, each and every news is important. Okay, but looking at the nature of the question, when the government is focusing more on climate change, such examples become more important. Okay, और इसी से related, in order to tackle the climate change, global warming, we can talk about the another news item, which is electrical highways. Electrical highways. Okay, so I hope that ऐसा सुना भी है कि नहीं, पेपर पढ़ रहे हैं आप लोग. Everyone is simply waiting for the lectures to happen. Okay, even if you are not reading the newspapers completely, but still, like I always say, you have to go through some of the articles. Okay, the opinion section, it will help you to prepare your essay better. ठीक है, तो ओपिनियन सेक्शन को पढ़ेंगे. बहुत सारे बच्चे हैं ऐसा, of course I know that many of you are constrained of time, so you fail to go through the newspapers completely. But still you have to ensure that at least you are going through the opinion section, जो ओपेड के नाम से आता है. ठीक है, तो उसको देखेंगे. So electrical highways, the Union Ministry of Transport and Highways has come up with this idea, okay, of electrical highways, and यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. ओके, और इसका आइडिया क्या है? whenever somebody is traveling through the highways, okay, if somebody is traveling through the highways, he must have access to the electricity. Okay, so solar powered electrical points, okay, or charging points will be available on the highways. ठीक है, इसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल हाईवे का. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग, इलेक्ट्रिकल हाईवे से नाम से यू कैन गेस कि इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, द एक्सेस टू पावर, बट एग्जैक्टली हाउ इट इज गोइंग टू बी गिवन टू द पीपल, इट विल बी गिवन टू द पीपल बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ सन. ये आपको याद रखने की जरूरत है, इसमें बाकी कोई खास चीज नहीं है. ओके, सो एवरी व्हीकल विच इज ट्रेवलिंग ऑन द हाईवे शुड गेट दिस thing. Okay, and more recently, if you remember, we had discussed about double dip La Nina. Now triple dip La Nina is in news. Okay, so triple dip La Nina. So what is La Nina? La Nina का आइडिया है सभी को? What is it? Okay, okay, La Nina, if some of you are not aware, I'll try and show you what exactly is this. Okay, let us say this is Australia and this is South America. Okay, and
यहां क्या होता है, करंट सिस्टम इज देयर, ओके, दिस इज पेरूवियन करंट, और इसी को हम कहते हैं हम्बोल्ट करंट। Okay, so whenever this Peruvian current is colder than normal, तो इसे हम कहते हैं ला नीना इवेंट। Okay, and whenever this is warmer than नॉर्मल, इसे हम कहते हैं एल नीनो। ओके, सो इट इज एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर करेंट्स दैट इज पेरूवियन और हम्बोल्ट करंट, इससे रिलेटेड है ये। एंड इफ यू लुक एट द हिस्टोरिकल एविडेंसेस, ओके, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस कंसेक्यूटिव ला नीना इवेंट्स वेर देयर, बट दिस टाइम ट्रिपल डिप का मतलब क्या है, 3 कंसेक्यूटिव ला नीना ईयर्स। ओके, 3 बार कंटिन्यूअसली ला नीना हो चुका है। अब इफ यू लुक एट द ला नीना इवेंट, ओके, इफ यू लुक एट द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव, ओके, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इंडिया में हम हैं, हमें इंडिया के हिसाब से समझना जरूरी है। ओके, सो व्हाट हैपन्स व्हेन एवर देयर इज ए ला नीना इवेंट? ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लाइक आई सेड, ला नीना में क्या हो रहा है, दिस इज समथिंग दैट कोल्ड है ये। ओके, सो वेन एवर इट इज कोल्ड, द कोल्ड विंड इज रीचिंग दिस एरिया। ओके, इसका मतलब क्या है, कोल्ड है तो यहां सूखा पड़ जाएगा, यूएस में भी सूखा पड़ जाएगा। ओके, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, सूखा पड़ जाएगा। बट इसका सबसे बड़ा फायदा अगर देखते हैं, ओके, सो दिस इज द हाई एरिया एंड दिस थिंग कम्स टू इंडिया। ओके, यहां से डायरेक्टली ये रिलेटेड है इंडिया से। अगर यहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, ओके, इन केस इट इज एन एल नीनो इवेंट, इट मीन्स दैट द मॉइस्चर दैट इज कमिंग फ्रॉम हियर विल नॉट रीच इंडिया। ठीक है, इंडिया ये नहीं आ पाता है। But in case it is a La Nina event, okay, whenever it is a La Nina event, we see that India gets benefited. Okay, so 3 consecutive La Nina events have benefited India. Okay, इससे भारत को फायदा हुआ है, and that too it is consecutively for 3 years. नहीं तो क्या है कि the chances were very high that we could have experienced less rainfall. हमारे यहां हालत खराब हो जाती और प्रोड्यूस हिट हो जाता। एंड of course at that point in time when already the world is struggling with the impact of climate change. Okay, so La Nina events have actually helped, okay, some of the countries to produce more. The other impact that it is having, ठीक है, ये कैसा है, कोल्ड करंट है। It means that when it is getting colder and colder, it is reducing the impact of global warming. नहीं तो हमें और एक्सट्रीम इवेंट्स देखना पड़ता। ठीक है, इट रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड दैट इज अ गुड न्यूज फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, पर द बैड पार्ट ऑफ इट इज इट कैनॉट check the historical
impacts. It cannot check the historical impact. Okay, what does it mean? It cannot reverse global warming. इसने क्या किया है? Simply it has slowed down the effect that we could have experienced. 3 साल अगर ला नीना नहीं होता तो जो आप आज की डेट पे कोल्ड वेव और कोल्ड वेव सिचुएशन, सॉरी हॉट वेव्स, ठीक है, हीट वेव्स जिसको आप कहते हैं, वो और ज्यादा होते और दुनिया की हालत और खराब होती. अब ला नीना होते हुए भी यूरोप इज सफरिंग. ओके, अगर ला नीना नहीं होता सो ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड कुड हैव सफर्ड हीट वेव्स. ओके, so now this is also important, you have to cover this thing. Okay, and I hope that everybody is aware कि ला नीना एल नीनो क्या है. अगर नहीं पता है तो मे बी some fine day we'll be discussing the whole of it because it is important. Now the World Meteorological Organization said that this La Nina event happened. Okay, ट्रिपल लानिना हैपेंड आफ्टर 100 years, बट आर ऑब्जर्वेशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि देयर वेर एटलीस्ट 6 इवेंट्स. ओके, सो देयर इज नॉट मच क्लैरिटी अबाउट व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू एक्सेप्ट और कंसिडर, बट बाय द टाइम यू विल बी अपीयरिंग फॉर द एग्जाम डेफिनेटली विल हैव मोर न्यूज अबाउट इट एंड देन वी कैन बी श्योर ऑफ कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. ओके, नाउ the other news which is related to geography is traffic separation scheme. And in case anybody has any type of confusion, कोई ऐसी चीज हो जिसे समझने में दिक्कत आए तो you have to make sure that you are asking. But of course I expect that everybody is making at least some kind of notes for themselves. पीडीएफ आपको मिलने वाली है, इसका मतलब लिखेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं करेंगे. ओके, लाइक टुडे इन द मॉर्निंग ओनली व्हेन आई वाज टेकिंग अ लेक्चर फॉर ऑप्शनल, तो एक बच्चे ने कहा कि सर बहुत लिखा, बहुत हाथ में दर्द हो गया है. ओके, तो हाथ में दर्द होगा फिर भी लिखेंगे. द रीजन इज दैट you will be supposed to write for 6 hours continuously in a single day when you will be appearing for mains, और वो एक दिन नहीं करना होगा. ठीक है, वो काफी दिनों तक आपको करना होगा. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस थिंग विदाउट फेल. ठीक है, लिखने की आदत रखेंगे. नाउ ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम. ओके, सो ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम इज समथिंग विच इज meant for preventing the collisions. Okay, or collision not only amongst the vehicles. ठीक है, पहले तो ये समझना है कि ये किससे रिलेटेड है. ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम, ट्रैफिक इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ये कोई भी बता सकता है. ओके, बट इट इज रिलेटेड टू शिपिंग इंडस्ट्री. ओके, तो पहले तो ये स्कीम पूछी जाएगी तो ये पूछा जाएगा कि ये रिलेटेड किससे है. दैट टू नॉट इनलैंड ट्रांसपोर्ट, इट इज रिलेटेड टू मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट. ओके, इट इज रिलेटेड ओनली टू मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट. इट मीन्स दैट द voyages that take place in the oceans. Okay, and this traffic separation scheme is in news to ensure that ships do not collide with blue whales. ठीक है, in order to save the blue whales, traffic separation scheme is again in news. Okay, सो इसमें होता क्या है
The traffic separation scheme is a scheme where separate routes are designated. To avoid collision. Okay, to avoid collision, इसी के लिए ये बनाए जाते हैं. But this is the first time that it has been for saving some sea mammal. ठीक है, ब्लू व्हेल को बचाने के लिए ये किया गया इस बार. ठीक है, so this is important. And now again in the ocean, if you रूट्स कैसे होते हैं, अभी आप रोड पे जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, तो रूट्स आर वेरी डिफाइंड. ओके, बट वेन एवर यू आर डिफाइनिंग ए रूट इन द सी और द ओशन और एविएशन, मोस्टली दे आर गवर्न्ड बाय सम इमेजिनरी लाइन. ओके, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि इस रेंज के बाहर जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा. ओके, शिप्स कैन मूव 5 kilometers there, 5 kilometers here without any problem. So the biggest challenge to implement these things is that it has to be the vehicle and the networking systems which will take care of whether they are moving in the right direction or not. Okay, so all good everyone, and if you have covered some of these you can let me know. ठीक है, जिसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि it was covered in some other aspect, you can let me know. Okay, some of the news items are like this only. Okay, and more detailed information about every aspect of this of course you'll get in the PDF. आज ही वो आपके साथ शेयर होगी, वो आपको मिल जाएगा. नाउ आई सेड कि बहुत सारे प्लेसेस भी न्यूज में है. सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द कैमरून वॉल्केनिक लाइन. ओके, द नेक्स्ट न्यूज आइटम दैट इज इंपॉर्टेंट इज कैमरून वॉल्केनिक लाइन. दिस इज इन न्यूज. Okay, and this is something can be asked. Volcanoes से related question आ सकता है या फिर place से related question आ सकता है. You can get a question based on places. Okay, so Cameroon, if we talk about, this is Africa. So this is the area we are talking about. Okay, अगर इस चीज की हम ये वाला part, ठीक है, so Cameroon volcanic line, these are, this is something which is called as Cameroon volcanic lines. Okay, this area we are talking about, this area. Okay, so it is in news. तो Cameroon volcanic line कहाँ पे है? Cameroon के पास है. This is easy to tell. Okay, so this is, most of it is in Cameroon. Okay, most of the part lies in Cameroon, but this is not the thing that I expect that UPSC will ask. It will ask some of the other names which are associated with it. Okay, so Lake Cook is in news. Okay, Lake Cook, Lake Nyos जो है, ये जगह ऐसा नहीं है कि पहली बार इस साल न्यूज में. For 3 times it was in news, so chances are very high that a question can be picked from this area. ठीक है, अलग अलग 3 लेक्स के लिए ये न्यूज में था. आई एक्सप्लेन कि वो कारण भी क्या थे. आई डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट. सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू नो द लोकेशन, जो कि हमने देखा है. इट इज अफ्रीका, एंड अफ्रीका में लोकेशन कहां पे है इसकी? ओके, नाइजेरिया चड के बीच में कैमरून है. यहां क्या है कि आपका नाइजेरिया है एंड हियर चड. ओके, so Lake Cook was more recently in news. उससे पहले आपका Lake Nyos न्यूज में था. Okay, Lake Nyos was also in news. So this is the location of
लेक न्योस, एंड उसके बगल में है लेक कुक, KUK. ओके, सो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं. सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट कैमरून वॉल्केनिक लाइन, तो उसकी लोकेशन, लेक्स का नाम अगर पूछते हैं तो उनकी लोकेशन यू हैव टू नो. एंड द थर्ड लेक फॉर विच इट वाज इन न्यूज is Lake Monaun. Okay, Lake Monaun.